Hello friends, welcome to Aband Academy. In the last series of lecture, we are discussing the problems on the symmetric group. So in this particular lecture, we will discuss about the set 3 on the problems on the symmetric group. So in the last lecture, we have discussed set 2. So in this particular lecture, we will discuss set 3 on the problems on the symmetric group. So let's start our discussion. So what we have seen in the previous set of lecture is that a K cycle, suppose we have a K cycle like this, A1, A2, A3, AK. This is nothing but a K cycle. So a K cycle can be disposed into a K minus 1 number of transposition. Okay, so we have length of cycle that is K. Okay, now we have number of transposition, that is K cycle gives K minus 1 number of transposition, and we have type of permutation. Okay, so let us have a tabular form. So we have, suppose the length of cycle is even, then we have number of transposition even minus 1. The even minus 1 is nothing but odd, and we have the type of permutation. So number of if the number of transposition is odd, then we have type of permutation is odd permutation. Okay, now we have length of cycle as odd, then we have number of transposition is K minus 1, so odd minus 1, this is nothing but even. If the number of transposition are even, then we have even permutation. So the relation is, if the length of cycle is even, then it is an odd permutation. If the length of cycle is odd, then we have even permutation. So let us solve this question based on this concept. So this is nothing but a 3 cycle. Okay, so this is length of the cycle is odd, so we have even permutation. Now this is a 1, 3, 5, 6, so this is a 4 cycle. So length of cycle is even, then we have odd permutation. ठीक है, अब देखो ये क्या है 1, 3, 5, 6, 7, ये क्या हो गया 5 cycle. So length of cycle is odd, then we have even permutation. ठीक है, अब देखो ये क्या है 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 2. Okay, so ये क्या है product of non-disjoint cycle. Let us do the multiplication. So this is 1, 2, 1, 3, 4 or 1, 5, 2. Let us write down this in a terms of product of disjoint cycle. So let us do the multiplication. So this is 1. So start from 1. So this is 1 goes to 5, 5 goes to 5, 5 goes to 5. Now we have 5 goes to 2, 2 goes to 2, 2 goes to 1. This is closed. Now let us start with 2. So 2 goes to 1, 1 goes to 3, 1 goes to 3, 3 goes to 3. Now we have 3 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 4. Now we have 4 goes to 4, 4 goes to 1, 4 goes to 1, यहाँ आ रहा है ना, and 1 goes to 2. So this is closed. So all the elements are covered 1, 2, 3, 4 and 5. Now we can write 2, 3, 4. Let us write down 2, 3, 4 in the product of transposition form. So this is 1, 5. Let us break 2, 3, 4. So how we break this? So we have the first element and the last element. This is 2, 4. First element and the second last element. This is 2, 3. So we have this product of non-disjoint cycle can be written as product of 3 number of transposition. 3 number of transposition. The number of transposition is odd. This means this cycle is nothing but a length of number of transposition is odd. So number of transposition odd, then this cycle is odd permutation. Okay, now let us discuss this one E. So we have 1, 2, 4, 3 times of 3, 5, 2, 1. Let us do the multiplication. Let us start with 1. So 1 goes to 3, 3 goes to 1. So this is closed. Now we have start with 2. So 2 goes to 1, 1 goes to 2. So this is closed. Now we have 3, 3 goes to 5 and 5 goes to 5. Now we have 5 goes to 2, 2 goes to 4. Now we have 4 goes to 4 and 4 goes to 3. So this is closed. 1, 2, 3, 4, 5. Everything is covered. So this we can write as 3, 5, 4. This is nothing but a 3 cycle. So length of the cycle is odd. So this permutation is nothing but a even permutation.
even permutation because the length of the cycle is odd. Okay, now let us discuss question number 12. Let n be a positive integer if n is odd. Okay, is an n cycle an odd or an even permutation? Okay, so n is odd. Okay, so n is nothing but length of cycle. Okay, so let us draw a table. So we have length of cycle, that is n. Okay, and this is number of transposition, and we have number of times. The length of cycle is n, the number of transposition is n minus 1, and this is type of permutation. Okay, तो देखो अगर n साइकिल है, n साइकिल मतलब लेट अस टेक ए n साइकिल लाइक दिस a1 a2 a3 an, ठीक है। तो इसको अगर ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, a1 an फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट, then we have first element and second last element an minus 1 like this, and last term will be a1 a2। तो यहाँ पे कितना हो गया है, ये n साइकिल है ना, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन n minus 1 हो जाएगा, n minus 1 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। let us take an example. Suppose we have a cycle like this 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा 5 साइकिल, ये क्या है 5 साइकिल। तो n minus 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आता है। तो let us check this, let us write down in the terms of transposition. So first element and last element, so 1 5, now we have 1 4 first element and second last, similarly 1 3 and 1 2। तो कितना आ गया 4 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आ गया ना। तो n number of n cycle gives a n minus 1 number of transposition, similarly 5 cycle gives a 4 number of transposition, that is 5 minus 1। so length of cycle n है, तो number of transposition n minus 1, ठीक है। तो क्या है देखो यहाँ पे दिया if n is odd, तो पहला केस ले लो, केस 1, if n is odd, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होगा odd minus 1, तो ये क्या होगा इवन। तो हमने क्या देखा है टाइप ऑफ परमुटेशन, अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है तो टाइप ऑफ परमुटेशन इवन होगा। सिमिलरली लेंथ ऑफ साइकिल इवन हो गया, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होगा इवन माइनस 1, तो ये क्या हो गया ऑड। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है तो टाइप ऑफ परमुटेशन ऑड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, इफ n इज ऑड इज एन n साइकिल एन ऑड और ए इवन परमुटेशन। सो n ऑड है, ऑड के केस में क्या हो गया इवन हो गया, ठीक है। तो n अगर ऑड है तो ये इवन परमुटेशन हो जाएगा। अगर n इवन है तो n की वैल्यू इवन है, तो n साइकिल क्या होगा ऑड परमुटेशन होगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या दिया हुआ है, केस 1, इफ अल्फा इज इवन प्रूव दैट, इफ अल्फा इज इवन प्रूव दैट अल्फा इनवर्स इज इवन। तो केस 1 में क्या है, अल्फा इज इवन परमुटेशन, दिस implies अल्फा इनवर्स इज even, this we have to prove। Okay, so since alpha is a even permutation, this means alpha can be disposed into a even number of transposition. Let us take tau as a transposition. So alpha is equal to tau 1 tau 2 tau 3 tau r minus 1 tau r, where r is equal to even, because alpha is a even permutation, so it can be breaked into a even number of transposition. Let us take inverse both sides. So we have tau 1 tau 2 tau 3 tau r minus 1 tau r। Okay, let us take the inverse. So this is equal to tau r inverse tau r minus 1 inverse, this is equal to tau 3 inverse tau 2 inverse tau 1 inverse। Okay, so since tau 1 tau 2 like this, tau r is a transposition, ठीक है। तो 1 2 is a transposition है ना, तो 1 2 times of 1 2, let us do the multiplication। so this is equal to, let us take an example। so 1 2 1 2 is a transposition, 1 2 is also a transposition, so let us do the multiplication। so we have start from 1, so 1 goes to 2 2 goes to 1, so this is closed। now we have 2 goes to 1 1 goes to 2, so this is closed, this is identity। so 1 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 2, so tau 1 का इन्वर्स tau 1, similarly like this। so we have,
तो टाउ आर का इन्वर्स क्या हो गया, टाउ आर माइनस वन का इन्वर्स टाउ आर माइनस वन, टाउ थ्री का इन्वर्स टाउ थ्री, टाउ टू का इन्वर्स टाउ टू, टाउ वन का इन्वर्स टाउ वन। लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन। अल्फा अल्फा इन्वर्स इज इक्वल टू टाउ आर माइनस वन लाइक दिस, टाउ थ्री, टाउ टू, टाउ वन। तो अल्फा इन्वर्स इज इक्वल टू टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री लाइक दिस, टाउ आर माइनस वन, टाउ आर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, आर हमारा इवन था, तो ये कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक हो गया, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। So we have represented alpha inverse as even number of transposition. This means alpha inverse is an even permutation. ठीक है? Similarly, let us take alpha as odd. Okay, so case 2 में क्या है हमारा, अल्फा ऑड है, तो हमें क्या शो करना है, अल्फा इज ऑड, देन वी हैव टू शो अल्फा इनवर्स इज ऑड परमुटेशन। ठीक है, तो अल्फा ऑड है ना, तो इसको ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक होगा। ठीक है, तो आर इज ऑड। ठीक है, और ऑड हो गया, so this means, so we have represented alpha inverse like this. So on rearranging, alpha inverse can be represented like this. So we have R as odd. So alpha inverse can be represented as odd number of transposition, because odd number of transposition, because R is odd here. Okay, so alpha inverse is represented as odd number of transposition. Therefore, alpha inverse is odd. As simple as that. Now let us discuss question number 14. ओके, इन Sn लेट अल्फा भी है आर साइकिल, अल्फा क्या है, आर साइकिल। ठीक है, तो आर साइकिल है तो आर माइनस वन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक होगा। ठीक है, बीटा क्या है, एस साइकिल, तो कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में होगा, एस माइनस वन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक होगा। गामा क्या है, टी साइकिल, तो टी माइनस वन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक होगा। ओके, तो अल्फा बीटा कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में होगा, आर माइनस वन प्लस एस माइनस वन इज इक्वल टू आर प्लस एस माइनस टू नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो क्या दिया भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अल्फा बीटा इज इवन, तो अल्फा बीटा इवन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इवन परमुटेशन, इफ अल्फा बीटा इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा बीटा इज एन इवन परमुटेशन, देन अल्फा बीटा मस्ट बी represented as even number of transposition. So r plus s minus 2 is a number of transposition, this must be even, so this means r plus s minus 2 is equal to even. तो r plus s क्या हो जाएगा, even plus 2 is equal to even, तो r plus s की वैल्यू क्या हो गई, इवन हो गई, दिस इज नथिंग बट इवन। ठीक है, अब अदर वे राउंड, इफ एंड ओनली इफ है ना, देखो तो r प्लस एस क्या दिया हुआ है, इवन, अदर वे राउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो r प्लस एस माइनस टू क्या होगा, इवन माइनस टू इज इक्वल टू इवन, और r प्लस एस माइनस टू क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन फॉर ए परमुटेशन अल्फा बीटा। ठीक है, तो किसी परमुटेशन का नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा इवन ट्रांसपोजिशन है। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन आ गया, इसका मतलब वो परमुटेशन कैसा है, इवन है। ओके, नाउ वी हैव दिस वन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फा के अंदर कितना नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, आर माइनस वन, बीटा में कितना है, बीटा साइकिल में कितना ट्रांसपोजिशन दे रहा है, एस माइनस वन, तो ये एस माइनस वन देगा, ये कितना दे रहा है, आर माइनस वन दे रहा है, गामा कितना दे रहा है, टी माइनस वन दे रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना हो जाएगा, आर माइनस वन प्लस एस माइनस वन प्लस टी माइनस वन, तो दिस इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस टी माइनस थ्री। ठीक है, तो क्या दिया क्वेश्चन में, इफ अल्फा बीटा गामा इज इवन इफ एंड ओनली इफ आर प्लस एस प्लस टी इज, तो अगर अल्फा बीटा गामा इवन है, इवन परमुटेशन है, तो इवन परमुटेशन के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होगा, इवन होगा, तो आर प्लस एस प्लस टी क्या होगा, इवन प्लस थ्री, तो इवन प्लस थ्री क्या होगा, ऑड होगा। ओके, तो आर प्लस एस प्लस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड। अब अदर वे राउंड ले लो, अदर वे राउंड में कर क्या करेंगे, देखो
देखो आर प्लस एस, सॉरी, आर प्लस एस प्लस टी क्या है, ऑड है। तो आर प्लस एस प्लस टी माइनस थ्री क्या होगा, ऑड माइनस थ्री। समझ में आ रहा है, ऑड माइनस थ्री क्या होगा, सपोज वैल्यू ले लो सेवन, ठीक है, तो सेवन माइनस थ्री क्या होगा, सेवन माइनस थ्री क्या हो गया, फोर है, तो ये इवन आ गया ना। समझ में आ रहा है, तो आर प्लस एस प्लस टी माइनस थ्री क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ परमुटेशन अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या आ गया, इवन आ गया, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा क्या है, अगर किसी परमुटेशन का जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इसका मतलब वो परमुटेशन क्या है, इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम ऑड लेके चले तो हमारा जो परमुटेशन है वो इवन आ रहा है, ओके। So we have discussed up to question number 14. So we will discuss further questions in next particular lecture. Thank you.